So aji ka class re ame discussion kariba overview on the DevOps. So what is DevOps? What is its predictions, trends, what's the trends going on? How केमती हम career DevOps रे करि पारे. तो ता ऊपर entirely हमें आज discussion करिबा entire overview on DevOps, right? So first let's understand what is DevOps and then we'll discuss about why we are going to learn DevOps. Okay. What is DevOps? You can see this particular image and it seems as one infinite, right? Infinite loop. And here you can see lots of stages available. All these stages will discuss and will work in this DevOps. For now, just leave it. We'll just discuss about what is DevOps and then we are going to learn all these stages. Okay. Now, first let's see what is DevOps. DevOps is a set of practices, tools, and cultural philosophy. What is it? DevOps is a set of practices, tools, and a cultural philosophy that automate and integrate the process between software development and IT team. So software development, who develops the software developers, right? And the development which happens, we create the software development process. And software development has its own life cycle, development life cycle, that is called SDLC. And when we have the software development team, once the software is done, developed, once it is into production, right? There will be a team who will maintain it, manage it, support it, and that team will be our IT team, IT operation team. Operations. We call IT operations or production support team who will support that applications. So what is it? It is a set of practices, tools, and cultural philosophy that automate and integrate processes between the software development and IT teams. And it emphasizes team empowerment, cross team communication, and collaborations. This word, whatever you are seeing, right? Team empowerment, cross team communications, and collaborations and technology automations. What are these? So এই যে ଟର୍ମସ୍ ଗୁରା ସବୁ ଆମେ ଯଦି ଠିକ ସେ ନ ବୁଝିବା ତାହେଲେ ଆମେ ଡେଭଅପ୍ସ ବିଷୟରେ ଜାଣିପାରିବାନି. ତ ଡେଭଅପ୍ସ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବେସିକାଲି ତମେ ଯଦି ଦେଖିବାକୁ ଯିବ ଡେଭଅପ୍ସ ଗୋଟେ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ନୁହଁ କି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ନୁହଁ ଯେ ତମେ ଜଷ୍ଟ ପଢିଦେଲ କି ଶିଖିଦେଲ ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରିଦେଲ ହେଇଗଲା. ତ ସେଥିପାଇଁ କଣ କହିଛନ୍ତି ଡେଭଅପ୍ସ ଗୋଟେ ହଉଛି ଗୋଟେ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ, ଗୋଟେ ସେଟ୍ ଅଫ ପ୍ରାକ୍ଟିସେସ୍ ଆଉ ଗୋଟେ କଲଚରାଲ ଫିଲୋସଫି ଲାଇକ କଲଚର ତୁମେ ଫଲୋ କରିବ. You don't have to learn it, you have to follow it, you have to practice it, and you have to collaboratively work within the team. That's why it says team empowerment means whenever you are following the DevOps, you have to empower team. So what is a team? Team ଟା ଗୋଟେ କଣ? Forget about technical, forget about IT software. Normally ଗୋଟେ team କଣ? Group of members, right? Group of people or group of members. ଯେକୌଣସି ଏବେ ଆମେ ସ୍ପୋର୍ଟସ ଯିବା ଗୋଟେ କ୍ରିକେଟ ଟିମ୍ ଆମେ 11 ଜଣ କି 11 ଜଣ ପ୍ଲେୟାର କୁ ନେଇକି ଖେଳିବା, ରାଇଟ? ଗୋଟେ ଟିମ୍ ହିସାବରେ ଆମେ କାମ କରିବାକୁ ପଡିବ. ତ ତମେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ କାମ କରୁଛ ତମେ ସିଙ୍ଗଲ ନଥିବ, ସେ ତମ ଟିମରେ ଗୋଟେ ମାନେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରେ ମଲ୍ଟିପଲ ପିପଲ ଥିବେ, ମଲ୍ଟିପଲ ମେମ୍ବର୍ସ ଥିବେ, ତାର ଗୋଟେ ଟିମ୍ ତମେ କାମ କରିବ. ସେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କଲାବେଳେ डेवलपमेंट सहित ता सहित टेस्टिंग थांती, टेस्टिंग टीम थांती, जे टेस्टर टीम्स जे माने टेस्टिंग करंती एप्लीकेशन, डेटाबेस टीम थांती, से बळे माने एप्लीकेशन टीम थांती, ता सहित मैनेजमेंट टीम थांती, ऑपरेशन टीम थांती. सो डिफरेंट डिफरेंट टीम सहित तमे कोलैबोरेटिवली काम करी. आ जो टीम एम्पावरमेंट कहउछंती, टीम एम्पावरमेंट ता कोन ना आमे जतले काम करछे कोटे दिनसरे कोटे पर्टिकुलर किछि प्रोजेक्ट रे तो सब चेष्टा करेंगे डेवलप्स आम कल्चर फॉलो कर टीम एम्पावरमेंट हम माने टीम जमी ग्रो कर सब नॉलेज इक्वाली शेयर हम एंड एवरीवन शुड नो व्हाट इज गोइंग ऑन, राइट? दैट वी हैव टू नो. एंड क्रॉस टीम कम्युनिकेशंस जमती कि कहले हम मल्टीपल टीम काम करतबा, डेवलपमेंट टीम थी, सपोर्ट टीम थी, टेस्टिंग टीम थी, मैनेजमेंट टीम थी, डेटाबेस टीम थी, राइट? एवरीवन cross team communication. तमे एकुटिया किछि DevOps रे you cannot do anything in single handed. So you have to be dependent on other teams. You have to collaboratively work with other teams, right? So collaboratively work means you have to do the proper communications.
Suppose Subhasri from development and Rajasri is from suppose from database team, application team and database team. So if both have to collaboratively work in order to deliver the product, because you from application side you should require some database knowledge on database things, right? Whatever the database API, right? Database server name or database details to fix in your to write your site code, right? All these informations you need. Even a support engineer also is required help to understand the concept. For DevOps engineer, that guy has to collaboratively work within all the team. Without that, he cannot do the automations. Okay? And technology automations. So whenever we do automation, what is automation? Normally, I mean, automation career, right? Automation ta kaun actually? Automate, right? What is that automate? Means the manual work which you do daily that can be programmed so that automatically it can run, right? जो कामटा आमे डेली मैनुअली करूचे सेटा आमे किछि ऑटोमेटिक वे रे करि दवा तो जोटा कि किछि मशीन द्वारा हो कि प्रोग्राम द्वारा हो सेटा रन हो ऑटोमेटिकली. That part is called automations. तमे किछि डेली प्रॉब्लम्स, राइट? डेली प्रॉब्लम्स, डेली मैनुअल वर्क, राइट? तमे जोटा करूचे सेटा तमे चाहिले ताको ऑटोमेट करि पार. That process we call as automations, right? ଯେମିତି କି ଆମେ ନର୍ମାଲି ଦେଖିଥିବୁ ଯେତେବେଳେ ଫ୍ୟାନ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ଫ୍ୟାନ୍ ଥିଲା, ରାଇଟ୍? ବିଞ୍ଚଣା ଯୋଉଟା କହୁଛନ୍ତି ଆମ ଓଡିଆରେ, ତ ସେଟା ଆମେ ଜଷ୍ଟ ଗରମ ହେଲେ ୟୁଜ କରୁଥିଲେ, ବଟ୍ ଏବେ କଣ ଫ୍ୟାନ୍ ଆସିଗଲାଣି, ଗୋଟେ ସୁଇଚ ମାରିଲେ ସୁଇଚ ଅନ୍ କଲେ ଫ୍ୟାନ୍ ଚାଲିଲା. So that is automations. We have automated something the manual process. जोड़ा manually हाथरे ଆମେ चलाउଥିଲେ, but something is being done by and running by the electricity, right? And similarly, जोटे कि हमें think about जो चाली कर जाउचे by work, पाखरे automated vehicles अच्छे, automatic, right? Automobiles. So बच्चे तो हमें bike use करके जाई परिबा. तो automations, technology automations, तो ये सब automate करिबा पाई you have to follow this culture. Now, in technically, if you think about in IT industry, all the manual job, whatever manual job means. So, when we talk about the software development life cycle, तो software development life cycle रे कौन होची ना तमे मो next phase रे software development life cycle पर बुझेबी हला ता पूर्वरु कहबी सब केम बुझेबी केमती हमें ऑटोमेट कौन पई हमें ऑटोमेट करबा और कौन पई प्रोसेस हमें फॉलो करबा. ठीक अछि? कौन कहछि ना it aims to certain the systems development life cycle and provide continuous delivery with high software quality. So provide continuous delivery, right? An example देलो जोटा कि continuous delivery हमको दोछ. Continuous means all the time, every time, continuously. Delivery means delivering something, right? So ये room रे किछि गोटा अछि जे continuously deliver करछि. Exactly. So fine. So it's whenever you press the switch, it will start running, and what it delivers. Open हम तो दोछि जेतोल हम जा तक continuously delivering the air, right? Now that is what, right? Continuous deliver. तो हमें एमती प्रोडक्ट जो एप्लीकेशन बनेबा तो सेटा केमती कि हमर जो सॉफ्टवेयर बनाउछि, सॉफ्टवेयर टा कोन हमें सॉफ्टवेयर काई बनो जोटे कंपनी सॉफ्टवेयर काई बनाउछि, जो सॉफ्टवेयर टा में बनाउछि सॉफ्टवेयर टा कोन गोटे प्रोग्राम टा जोटा कि ह्यूमन बीइंग्स रो, राइट? कामटा को आसान करि पारिबो, इजी करि पारिबो. तो जोटा कि हमें जो टू टीडीएस वर्क रोछि किछि कामटा हमें बहुत जल्दी करि पारिबा ऑटोमेशन ऑटोमेटेड वे रे. आउ हमर सॉफ्टवेयर गोटे प्रोग्राम यूज करछि किछि माने गेन करिबा पई, राइट? किछि यूज करिबा पई किछि एप्लीकेशन यूज किछि इंफॉर्मेशन स्टोर करिबा पई बहुत सारा डिफरेंट वेज डिफरेंट टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर अछि मार्केट. Different type of software ଅଛି ତ ସେ software how we can automate it, right? And how we can deliver it. ତ software ଆମେ ଯେତେବେଳେ ବନଉଛେ ଆମେ ଗୋଟେ କିଛି ଟାର୍ଗେଟ ନେଇକି ବନାଉଛେ, କିଛି ଏମ୍ ନେଇକି certain people କୁ ଆମେ ଟାର୍ଗେଟ କରି ବନଉଛେ, ରାଇଟ୍? ଗୋଟେ ସ୍କୁଲ ସଫ୍ଟୱେର ସପୋଜ ସ୍କୁଲ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ସଫ୍ଟୱେର ବନଉଛେ ତ ସେଥିରେ କାହାକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରୁଛେ ଆମେ?
स्कूल मान स्टूडेंट स्कूल मान तो स्कूल से सॉफ्टवेयर जो हमें बने स्कूल मैनेजमेंट से कस्टमर किए हम स्कूल तो से सॉफ्टवेयर स्कूल वाला यूज करी तो स्कूल माने टारगेटेड किए स्टूडेंट्स माने से सॉफ्टवेयर माने अटेंडेंस सब यूज करिवे तो स्कूल मैनेजमेंट हमने बनेले जो सॉफ्टवेयर हम डिलीवरी हम कस्टमर हे गेले स्कूल तो आमे चाहिबा जे सो एप्लीकेशन हम बनेइले सेटा केमिति very fast and high quality easily getting delivered to the customer এটা তো ଗୋଟେ very basic simple example ଦେଉଥିଲି ତ market ରେ ବହୁତ ସାରା company ଅଛି big MNCs company five tier companies right MNC five companies they what they do they have very like healthcare system ଦେଖିବ healthcare softwares right finance software banking software without software nothing is going now everything is automated and everything are being used by the software programs right so जो customer को हमें target करे सेटा केमिति हमें continuously with high software quality तांको deliver करिवा एटा ला main motto right and DevOps is a complementary of agile software development so remember few people there is a myth like they call it as DevOps is a technology they call it as DevOps is a methodology but it is not a technology or it is not a methodology so what is a methodology the methodology which we follow to deliver service or product to the customer so in this next class side I'll just discuss you what kind of methodology we had and we have currently and what are the things we are following right so DevOps is a complementary with software development agile development so DevOps follows agile methodology okay remember DevOps follows agile methodology so agile methodology some people say DevOps is a methodology. It's wrong. DevOps is not a methodology. It's a complementary to the agile methodology. It follows agile methodology. Current market following agile methodology. Okay. So DevOps is a culture to follow. And DevOps is a mindset and the approach towards, I love this point. It's very much important if you understand. What is it? DevOps is a mindset and approach towards the automation. How we can solve the problem, I can say quickly. Okay? Means ଆମର ଗୋଟେ ଏଇଟା ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ମୁଁ ଯେମିତି କି କାଲି ଆଚ୍ଛା ଠିକ ଅଛି ତମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସିଲ ତମ ରୁମ ରୁ ଘରୁ ଆସିଲ ଏଠିକି ତ କେମିତି ଆସିଲ ଅଟୋରେ या फिर ओला बुक କରି ତ ତମର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ତମେ ଚାହିଁଥିଲେ ବି ଯଦି ପାଖରେ ଥିବ ତମେ ଚାଲିକି ଆସି ପାରିଥାନ୍ତ କି ବାଇକ୍ ଧରି ଆସି ପାରିଥାନ୍ତ ତ ତମେ ଡିସାଇଡ୍ କରୁଛ ତମେ କଣ ପାଇଁ ମାନେ କଣ ୟୁଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ଇଟ୍ସ ଏଣ୍ଟାୟରଲି ୟୁର ମାଇଣ୍ଡସେଟ୍ ହ୍ୱାଟ ୟୁ ୱାଣ୍ଟ ଟୁ ଅଚିଭ୍ what is your requirement and how you want to achieve right so basically rajsi tangori just pack just two step रे सी पहुंची गल राइट जदि टिके दूर होइता से भाग तांकर रिक्वायरमेंट चेंज असले भाबी थांते मु चाली कि जेबी कि बाइक नहीं जेबी कि गाड़ी बुक करी जेबी जेमती तुम गाड़ी बुक करी आसला तो तमरो रिक्वायरमेंट हिसाब रे तम पाखरे जो अवेलेबिलिटी टूल सब अछि ताकू तमे केमती यूज करिवो तमरो माइंडसेट चला तमे केमती तम माइंडसेट हिसाब रे तमे ताकि यूज करिवो राइट so what is it it's a mindset and approach towards automation जेकोसी गोटे जिंस ऑटोमेट करिया आगु तमे केमिति ताको ऑटोमेट करिया चाहो छ डिटेल्ड तम माइंडसेट ऊपर डिपेंड करछ how we can solve the problem quickly and its tool sets like DevOps is not a single tool it's a collaboration it's a between multiple tools माने माने देखो तमे जेकोसी भी गोटे जिंस यूज करिया तमे जाउ छ हैला हेलो So whatever we are going to do, so it's set of tool sets. So various tools being used to perform and streamline the automation process. Various tools being used to perform and streamline the automation process. तो आम एक सिंगल टूल यूज करना आम वेरियस टूल यूज करछे केमती गोटे सॉफ्टवेयर फ्रॉम डेवलपमेंट
from development to production केमती आमे streamline करिकी process टा delivery faster way रे deliver करबा ठीक अछि so it's a set of tools various tools being used to perform and streamline the automation process okay and main thing is it's a collaboration between development and operations collaborations between development and operation so DevOps the name dev right comes from development and ops comes from operations so that's why it's named it as DevOps dev and ops okay DevOps operations it comes ops and DevOps okay so it's a collaboration so without operations development cannot do anything and without development operations also so whatever things there collaboratively you have to work and whenever you are a DevOps team and basically if you just think you will be the middleman ତମେ ସବୁବେଳେ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟଲି ମିଡିଲ ରେ ରହିବ ଯୋଉଟା କି କମ୍ପ୍ଲିଟଲି ଅଟୋମେସନ କରିବ ଆଉ ସବୁ ଟିମ୍ ମାନଙ୍କର କୋଲାବୋରେସନ ମାନଙ୍କ ସହିତ କମ୍ୟୁନିକେସନ କରିକି ସେଟାକୁ କ୍ରସ୍ କମ୍ୟୁନିକେସନ କୁହାଯାଏ ରାଇଟ୍ so what is DevOps ତମେ ବୁଝିପାରିଲ now DevOps କୋଉଠି ୟୁଜ ହବ right what is DevOps used for so DevOps mainly what it does it aims to increase the ability to deliver the product at a faster rate by reducing the inefficiencies, improving customer satisfaction, improving service, as well as improving the reliability. So DevOps aims to increase the ability to deliver the product at a faster rate by reducing the inefficiencies, improving the customer satisfaction, improving services, as well as improving the reliability. Okay. And let's see the predictability. What is this predictability? During new releases, DevOps reduces the risk of failure. Okay. During the new releases, DevOps reduces the risk of failure. New releases, man. New release. ମାନେ ଯେ ପ୍ରଡକ୍ଟ ନୂଆ ଅପଗ୍ରେଡ ନୂଆ ଭର୍ସନ ଆସିଲା ଧର ବର୍ତ୍ତମାନ ତମେ WhatsApp ଗୋଟେ ଭର୍ସନ ୟୁଜ କରୁଛ ନେକ୍ସଟ ଆଉ ଗୋଟେ ଭର୍ସନ ଆସିଲା ତ ସେମାନେ କଣ କରନ୍ତି ଅଟୋମେଟିକାଲି ରିଲିଜ କରନ୍ତି ନ୍ୟୁ ଅପଡେଟ କରନ୍ତି ତ ତମେ କଣ କରୁଛ ଅପଡେଟ ମାର ନା ନାଇଁ ଫୋନ ରେ ବସିକି ଅପଡେଟ ମାରିଲେ କଣ ହବ ନା ସେ ପୁରୁଣା ଭର୍ସନ କୁ ହଟେଇକି ନୂଆ ରିଲିଜ ଭର୍ସନ ଟାକୁ ଅପଡେଟ କର so predictability କଣ ରହୁଛି ନା during new releases DevOps reduces the risk of failure as we are going to use automate everything right tools so human ମାନେ କାମଟା ଯୋଉଟା ହ୍ୟୁମାନ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସିଟା ସେଟା ରହିବ ରାଇଟ୍ ତ କଣ ହଉଛି ନା ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଯାକ ୟୁଜ କରିବାକୁ ଯାଉଛେ ବାଇ ଟୁଲ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟୁମାନ ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ୱିଲ୍ ବି ନଟ୍ ଦେୟାର ଆଉ ହ୍ୟୁମାନ ଯଦି ଡିପେଣ୍ଡେନ୍ସି ନାହିଁ ତାହେଲେ ହ୍ୟୁମାନ ଏରର ଆସିବ ରାଇଟ୍ so during new releases DevOps reduces the risk of failures reproducibility it allows you to restore previously released version at any time माने जदि नुआ रिलीज रे किछि प्रॉब्लम आसिला तम इमीडिएटली प्रीवियस रिलीज टाको पाइबे जदि आमे नॉर्मली मैनुअली करथांते मैनुअली इंटरवेंशन रहिथांते ओडे ह्यूमन बीइंग करथांते ते आमे करिथांते त कोन हेतंदा मैनुअली आमे तो कहछि ओडे किछि प्रॉब्लम आसिला त जो स्टेप सब आमे करिचे ताको पुनी आउ थरे रिपीट करिया प्रीवियस स्टेप पूरा राइट ताको डिलीट करिया पुनी जो प्रीवियस स्टेप थिला से प्रोग्राम आनी कि ताको पकेबा तो एटा प्रोसेस टा की टाइम टेकिंग गोटे डिप्लॉयमेंट गोटे प्रोसेस टा इट्स नॉट सो इजी तमे गोटे डिप्लॉयमेंट एक्जेक्टली सब नेक्स्ट स्टेप रे जदि आगु पढिबा बुझिबा केमति कोन डिप्लॉयमेंट होउची डिप्लॉयमेंट स्टेप रे तमे बहुत सारा स्टेप्स यूज करिवो बहुत सारा माने स्क्रिप्टिंग हो बहुत सारा प्रोग्राम हो बहुत सारा मैनुअल वर्क तमे करिया पड़ियो डिप्लॉयमेंट बट सेटा को वर्तमान हमें डेवऑप्स द्वारा किंतु ऑटोमेट करिया गोटे सिंगल build button रे everything will be automated right now reproducibility means it allows you to restore the previously released versions at any time maintainability what is it DevOps offers seamless recovery during any new release crash or disabling the current system what is this DevOps offers seamless recovery during any new release crash or disabling the current system means recovering being any release crash
ମାନେ ଗୋଟେ ରିଲିଜ କରୁ କରୁ ବାଇ ଚାନ୍ସ କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସି ସିଷ୍ଟମ କାମ କଲାନି କ୍ରାଶ ହେଲା ତ ଏଇଟା କଣ ଅଟୋମେଟିକାଲି ରିକଭର କର ରାଇଟ୍ ଅଟୋମେଟିକ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ବି ଅଟୋମେଟିକ टाइम टू मार्केट मीन्स ଯେମିତି କି କହିଲେ ଆମେ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର ବନଉଛେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମରକୁ ଟାର୍ଗେଟ କରିକି ଡେଲିଭର କରିବା ତ ଆମେ ଯଦି ମାର୍କେଟ ଠିକ ମାନେ କଷ୍ଟମର ଠିକ ଟାଇମରେ ଦେଇ ନ ପାରିବା ତାହେଲେ ଆମର ରେପୁଟେସନ ମାର୍କେଟରେ ଖରାପ ରହିବ ତ ଯଦି ଆମେ ଅଟୋମେଟ କରିଦବା ୟୁଜିଂ ଡେଭଅପ୍ସ continuously will deliver to the customer then we can deliver to time to market within the time ମାନେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ଧର ଆମେ ଗୋଟେ କଷ୍ଟମର ପାଇଁ ଗୋଟେ ସଫ୍ଟୱେର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ତ ମେନ୍ ଥିଙ୍ଗ କଣ ହେଲା ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ତ ସେ ଗୋଟେ ଡେଡଲାଇନ ଦେଇଥାଏ ରାଇଟ୍ ଏତିକି ଡେଡଲାଇନ ଭିତରେ ମତେ ସଫ୍ଟୱେର ଗୋଟେ ଦରକାର ଗୋଟେ ପ୍ରୋଡକ୍ଟ ତ ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ ଡିଲ୍ କରିଥାଉ ଯେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ଆମେ ତମକୁ ଆମ ପାଖରେ ଏତିକି ରିସୋର୍ସ ଅଛି ଏତିକି କ୍ୟାପାବିଲିଟି ଅଛି ଏତିକି ଟୁଲ୍ସ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛୁ ଯେ ଆମେ ଏତିକି ଦିନ ଭିତରେ ତମକୁ ତମ ପ୍ରଡକ୍ଟ ତମକୁ ଡେଲିଭର କରିପାରିବୁ ତ ସେଇ ଟାଇମରେ ଆମେ ଯଦି ମାନୁଆଲ କରିବା ତ ଅବଭିୟସଲି ଟିକେ ଟାଇମ ଲାଗିବ ବଟ୍ ଆମେ ଯଦି ତାକୁ ଯଦି ମାନୁଆଲି ଆମେ କରିଥାନ୍ତେ ସମସ୍ତେ କିଛି ରିସୋର୍ସ ଲାଗିଥାନ୍ତେ କରିଥାନ୍ତେ ମାନୁଆଲି ତ ଯଦି ସେଟା ଲାଗିଥାନ୍ତା 30 days suppose 30 days right if we are going to automate it then it will reduce some time right maybe 20 days or 15 days so it effortlessly reduces the software delivery time up to 50% right up to 50% by using the DevOps. That is why should we use the DevOps, right? So greater quality. Obviously, quality will be greater. See, what a person manually something ତମେ ଗୋଟେ manually କିଛି କରୁଛ ଆଜି କରୁଛ ଠିକ ଅଛି କାଲି ଆଉ manually କଲାବେଳେ କିଛି ଏପଟ ସେପଟ ହବା human errors are always there ତମେ କିଛି ବି କରୁଛ ଏରର ବାଟରେ ଯାଉଛ ଗାଡି ଚଲଉଛ ବାଇକ୍ ଚଲଉଛ ଟିକେ ଏପଟ ସେପଟ ଭୁଲ ହେଲା ମାନେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଲା କି କିଛି ବି ହେଲା ତ ଦ୍ୟାଟ ଇଜ ହ୍ୟୁମାନ ଏରର ତମେ ଭୁଲ କଲ ରାଇଟ୍ ସିମିଲାରଲି ତମେ କିଛି ଆପ୍ଲିକେସନ ରେ କିଛି କରୁଛ ମାନେ କିଛି ବି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସିଲା ଡନ୍ ଏରର ବଗ ଆସିଲା କ୍ରାସ୍ ହେଇଯିବ ରିଲିଜ କିଛି କାମ କରିବନି ତ ବଟ୍ ଯଦି ଆମେ ତାକୁ ମେସିନାରୀ ୟୁଜ କରୁଛେ ଟୁଲ ୟୁଜ କରୁଛେ ଅଟୋମେଟ କରିଦଉଛେ ତ ସେମ୍ ଥିଙ୍ଗସ୍ ୱିଥ ଗ୍ରେଟର କ୍ୱାଲିଟି ହାଇ ସ୍ପିଡ वी कैन deliver to the client okay team can easily improve the application development quality. DevOps includes infrastructure issues, everything. Resiliency. What is this? The operational state of the software system is more stable, secure, and changes are auditable. Stable means constant, which is constant. ମାନେ କିଛି ତମେ ଯାହା ବି ତମେ ମାନେ ସିଷ୍ଟମ ତମେ ଡେପ୍ଲୟ କରୁଛ କି ଡେଲିଭର କରୁଛ କନଷ୍ଟାଣ୍ଟ ସେମ୍ ଷ୍ଟେବଲ ଭର୍ସନରେ ଯିବ ଅଟୋମେଟିକ ଆଣ୍ଡ ସିକ୍ୟୁର सिक्योर ऑब्वियसली कारण ଆମେ ବାହାର କିଛି ୟୁଜ କରୁନେ ମାନେ ହ୍ୟୁମାନ ଇଣ୍ଟରଭେନସନ ନାହିଁ ଅଟୋମେଟିକାଲି ୟୁଜେସ ସବୁ ସିକ୍योरली ଆମେ କ୍ରେଡେନ୍ସିଆଲ ସବୁ ସେଟअप କରିକି ସିକ୍योर ଡେଲିଭର କରୁଛେ ରାଇଟ୍ and changes are auditable audit means normally what happens audit କଣ ଯେକୌଣସି କାମ ମାନେ ଆମେ କରିଥିବା ତାର କାମ ଯଦି କାହା ପାଇଁ ଗୋଟେ କରିଥିବା ସେ କାମର ଆମେ ଅଡିଟ କରୁ ମାନେ କଣ ହେଇଛି କଣ ଚେଞ୍ଜେସ ହେଇଥିଲା ଏଇ ଦିନରେ ହେଇଥିଲା ତା ପୂର୍ବରୁ ହେଇଥିଲା चेंजेस पर कौन प्रोब्लेम आसला सब जिन ऑडिट करा जाए राइट तो सॉफ्टवेयर आल्सो ऑडिट करा हो जेंति गोटे चार्टर्ड अकाउंटेंट फर्म रे गोटे ऑडिट करा हो केते टका आसला केते परचेज हेतला केते सेल हेतला केते काहा को जायतला कोन खर्च होतला घरे गोटे इवन गोटे फंक्शन हेले भोजी भात हेले राइट भोजी फंक्शन हेले तो कोन परिया कोन आसला घर मुरबी जी तो लास्ट बसी ऑडिट करे ना नहीं खर्च केते कोन हिसाब वाला बट हियर the changes in software industry or software development what you do किसी भी तमरो डेवलपमेंट तमे कलो whatever development you did everything you can do audit okay that is auditable any changes in automations whatever deployment has happened what version was deployed what version was released what has happened why who had done changes everything is auditable okay that's why good resiliency cost efficiency obviously if we use tools human will not be involved there the work right reduce cost will be reduced also because tool is going to do all the software development process can be cost effective using DevOps and allows IT companies to save money and increase profit जोटी आमे 3-4 जण पिला दरकार सेठी काम करिवा पे जदी टूल आमे यूज करले थरे सेटअप कर देले से टूल कांस्टेंटली काम चला खाली गोटे पिला रहबो जे मेंटेन करू so it increases the profit and that's why we should use DevOps. Okay.
Not only cost efficiency, guys, actually, that is one factor. Suppose whatever the work you are doing, ଯେମିତିକି development life cycle ଟା next ବୁଝେ ସେତେବେଳେ ତମକୁ ବୁଝେଇବି କଣ କେମିତି କଣ ରହୁଛି. Okay. So software development life cycle, that is called SDLC. SDLC, software development life cycle. So what is the software development cycle and where you have to use DevOps and what is this DevOps process and all these things and what is the benefit of launching? Okay. The software development happens in different phases. It happens in different phases. Okay. It's not like in one go, it will be, we'll get it and done. No. In different stages. First stage, whenever a client gives you a requirement, right? That will be first thing will be your requirement gathering. Requirement is called requirement gathering. Okay, requirement gathering. So requirement gathering happens. So once you got the requirements gatherings done, then what will happen? You'll do requirement analysis. We'll do requirement analysis. Okay, requirement analysis. Then requirement analysis is done. So once you get this requirement analysis, what will happen? We got the requirement analysis, then we'll have the system design. What is system? We'll do the system design. Okay. Next comes system design. System design is done. After that, it comes development. Okay. Development. Development. So development is done. Development ହେଇଗଲା ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ତାକୁ testing କରିବା, right? We'll do the testing. Now testing ହେଇଗଲା. Testing सरला ପରେ ଆମେ କଣ କରିବା ନା product କୁ release କରିବା, କଣ କରିବା deliver କରିବା. Testing सरला ପରେ deliver to production, right? Deliver to production. Okay. So here you can see we have different stages from requirement gathering to requirement analysis to system design, right? Then development, then testing, then it comes to production, right? So ଯେତିକି ବି stages ଆମେ ଦେଖିଲେ steps, right? ତ ଏଇଟା ଆମେ କଣ କରିବା software development life cycle ଗୋଟେ step by step ସବୁ ଯିବ. ତ requirement first ଯେତେବେଳେ ଆସିଲା ଗୋଟେ requirement ଆସିଲା requirement gathering କଣ requirement ତାର team ଥିବ ଯେ requirement gather କରିବ ଆଣିବ ସବୁ. ତାପରେ ବସି analysis କରିବ, analyze କରିବ requirement ଟା କଣ କେମିତି କରାଯିବ ସେଟା analyze କରାହବ. Analysis ପରେ କଣ ହବ ନା system design କରାହବ. କଣ system ଦରକାର, କଣ software ଦରକାର, କଣ tool ଦରକାର ସବୁ analysis ପରେ ତାକୁ design କରାହବ. Design सरला ପରେ then development start ହବ. So development system design भी तमे सब analysis and design phase रे analysis and design phase रे ଆମେ ସବୁ କଣ କରିବା କଣ operating system use ହବ, କଣ tools use ହବ, right? କଣ programming language use ହବ, programming language ସବୁ ଯାକ आ ଭିତରେ decide କରାହବ. Decide सरला ପରେ development को ଆସିବ. Development ରେ ଧର suppose ଆମେ use କରିବା Java. Java tool development, Java programming language to develop ହେଲା. Develop ସଇଲା ପରେ testing ପାଇଁ ପଠା ହବ tester ମାନଙ୍କ ପାଖକୁ. ତ tester ମାନେ କଣ କରିବେ testing କରିବେ. Testing ସରିଲା ପରେ development ପରେ testing ପରେ production ସବୁ ପଳେଇ ଆସିଲା. ତ ଯୋଉ development ଆଉ testing ଭିତରେ okay, development and testing phases we have in development and staging ଆ ଭିତରେ ରହୁଛି ବହୁତ ସାରା ଯେମିତି କି within development ରେ ରହୁଛି unit tests, development ଭିତରେ ରହୁଛି unit tests, right? ତାପରେ ରହୁଛି unit test ସରିବ କିଏ କରିବ developer କରିବ. ତାପରେ ରହୁଛି build, okay? then build ସରିଲା, build ପରେ ଆସିବ quality check, quality assurance ରହିଲା, quality assurance ରହିଲା. ତ ଏଇ ସବୁ part
रोची विद इन डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग भितर एतिकी पार्ट सरिला पर जाके टेस्टिंग हबो फर्स्ट बिल्ड करिवो सो बिल्ड करिया पई हमरो आगुरु रहउतले बिल्ड इंजीनियर्स ओके बिल्ड इंजीनियर्स राइट सो क्वालिटी चेक क्वालिटी इंजीनियर्स we quality by quality engineers right and unit is was done by the developer okay developer and development developer what he will do developer कौन करे so कोड लिखिबो राइट प्रोग्राम कोड्स लिखिबो कोड लिखला पर ताकू से निजे भी टेस्ट कर तमे गोटे काम किछि गोटे करूछो ठीक है धरो गोटे छोटो प्रोग्राम लिखुछो ठीक से चलिला कि नहीं राइट कौन कोड प्रॉब्लम अछि त की कर तमे निजे टेस्ट कर दियो एटा चलछि ना नहीं एमती घरे किछि गोटे मेकानिकल कि इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट हम टेस्ट कर चलछि कि नहीं तो सेमती यूनिट टेस्ट कौन करबे डेवलपमेंट पीपल जे डेवलपर जे थिबो से जस्ट कोड टाकू जोटा देखि से जानि परिबो ना कारण से निजे ही कोड लिखिछि तो से गोटे यूनिट टेस्टिंग करे तो सब चलछि ठीक ठाक राइट तब क्वालिटी चेक यूनिट टेस्ट सरला परे ताकू बिल्ड करिवो से कोडटा बिल्ड हबो जो कोडटा प्रोग्राम डेवलपर लिखि दिबो से कोडटा पूरा बिल्ड हबो बिल्ड हैला परे गोटे पैकेज बारी बाइनरी पैकेज जो पैकेज टाको हमें डिलीवर करिवा टेस्टिंग एनवायरनमेंट को डिलीवर हबो टेस्टिंग एनवायरनमेंट रे टेस्टर माने सब बसिथिबे जे टेस्ट करिवे धर हमें गोटे वेबसाइट बने वेब एप्लीकेशन कि धर हमें गोटे ट्रेडिंग एप्लीकेशन गोटे बने तो ट्रेडिंग एप्लीकेशन रे ठीक से चालुची ना नाही राइट तार जो अमाउंट शो करिया कथा सेटा शो करूची ना नाही तो सेटा की करिवो टेस्टर मानकु देले टेस्ट केसेस सब लेखा गला टेस्ट केसेस लेखा गला टेस्टर मानकु देले टेस्टर माने ताकर टेस्ट कले ए हिसाब रे तमे टेस्ट केस कोन कोनी टेस्ट केस कोन टेस्ट केस हला तमे जो गोटे एप्लीकेशन डेवलप कलो तार फंक्शनैलिटी सब होची राइट गोटे धर गोटे पेज रे गोटे लॉगिन माने गोटे वेरी सिंपल एग्जांपल दोची लॉगिन पेज राइट गोटे लॉगिन पेज रे तमे तो डिजाइन कलो धर गोटे लॉगिन पेज रे कोन दरकार गोटे यूजर नेम दरकार राइट तार इंफॉर्मेशन दरकार मोबाइल नंबर ईमेल आईडी तापरे पासवर्ड तापरे से लॉगिन करिवो कि खाली यूजर आईडी और पासवर्ड दरकार छाड़ लॉगिन पेज छाड़ रजिस्टर्ड पेज रजिस्ट्रेशन विषय हताओ से बेसी क्लैरिटी पाइ जे रजिस्ट्रेशन पेज रजिस्ट्रेशन पेज रे हमर नाम दरकार मोबाइल नंबर दरकार ईमेल एड्रेस दरकार यूजर नेम दरकार किमा पासवर्ड दरकार ई सब डिटेल्स दरकार तो हमें वेरीफाई कौन करबा ना जो यूजर नेम टा यूजर देछि ना नाही जो मोबाइल नंबर देछि सेटा डिजिट की कैरेक्टर नौची माने जदी गोटे डेवलपर डेवलप कला गोटे डिजाइन तो छि यूआई रे बैकएंड थियो फ्रंट एंड एंड बैकएंड जम हम काली बुझुतली फ्रंट एंड एंड बैकएंड थियो तो बैकएंड कोड लिखाई दो तो फ्रंट एंड रे जतबे से मोबाइल नंबर जागर जदी दे दो एबीसीडी सेटा से नौची ना नाही राइट यदि एबीसीडी नहीं गला देन रॉन्ग it should not take ABCD, it should take only digits, it should not take any characters, right? It should not take any characters, it should take only digits, right? No letters. तो ये सब को हमें से टेस्टर टेस्ट करियो और 10 नंबर मोबाइल नंबर केते 10 टा ना 10 नंबर हेतिवा दरकार मोबाइल नंबर राइट आ ईमेल आईडी रे वैलिड ईमेल आईडी देछि ना नहीं आ ईमेल आईडी से अगर हमें अलगा अकाउंट देले से नौछि ना नहीं राइट ये सब टेस्ट करियो राइट अपनी लॉगिन बटन प्रेस कर लॉगिन होची को पेज को जाउची कोन डिटेल्स कंप्लीटली सब टेस्ट करते राइट ये सब टेस्टर का काम है सब मैन्युअली करियो तो मैन्युअली की कोन क्वेश्चन वर्तमान सब ऑटोमेट है तो गोटे पिला गोटे मैन्युअली गोटे जिनिस करियो बसी टेक्निक देखिबो तो सेटा जने जते टाइम लागियो तको ऑटोमेटिक करके स्क्रिप्ट टेस्ट केसेस राइट ये जो जहां सब से टेस्ट कला तापे हमें कोन टेस्ट केसेस लेखा तो डेवलपर आउ टेस्टर मिसिके टेस्ट केस लिखियो डेवलपर गोटे लिखि दबो जे एटा हमें डेवलप करिछु आ सेटा हमें एटा यूज कले एटा आर रिजल्ट ए आसी राइट तो टेस्ट केसेस में सब डिटेल्स लिखाई थियो एक्चुअल डिजाइर्ड माने लेटेस्ट केस रे एक पर्टिकुलर नाम दिया रहेगा ए आइटम का रो बिहेवियर कोन एक्चुअल बिहेवियर कोन डिजाइर्ड बिहेवियर राइट ये सब कोन डिजायर्ड बिहेवियर एक्चुअल बिहेवियर एंड केमती आउटपुट रिजल्ट स्टेटस सब गोटे टेस्ट केस लिखाई तो से डिटेल्स का तुम दिया हम समय टेस्ट करिवे राइट सो एसडीएलसी प्रोसेस रे तुम जेतु पूरा कांस्टेंटली रोचे तो आमे डेवऑप्स इठी कोन यूज करी एठी जति जने मैन्युअली काम करचंती तो मैन्युअली इठी किछि पीपल दि जण तीन जण रोकारे रिक्वायरमेंट गैदरिंग दि जण कले तीन जण कले रिक्वायरमेंट एनालिसिस दि जण कले सिस्टम डिजाइन दि जण कले डेवलपर्स ऑफ डेवलपमेंट पांच जण कले यूनिट टेस्ट बिल्ड 2-3 जन कले राइट टेस्टिंग 2 जन कले कि 3 जन कले
प्रोडक्शन डेलीवर करिया पे ऑपरेशंस दुई जन रहिले तो एबि किति रिसोर्सेस रहउछन राइट तो आमे एठी कोन करबा ना ये सबु जाक कोन ना मैन्युअली आगु करा होतला जोटा कि हमर मॉडल गोटे थला वाटरफॉल मॉडल से मॉडल फॉलो करिकि माने वन आफ्टर अनदर गोटे परे गोटे जेमि देखियो पानी केमति पड़े स्टेप बाय स्टेप जब गोटे देखियो पांच पानी पड़ो स्टेप बाय स्टेप गोटे स्टेप पर आ गोटे स्टेप पर आ गोटे स्टेप धीरे 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 जाइकरी लास्ट को एंड रे गोटे जगह रहिबो द सेम थिंग जब आगु जेतो वाटरफॉल मॉडल यूज करथले तने फर्स्ट रिक्वायरमेंट गैदरिंग सरीबो तापर एनालिसिस स्टार्ट हबो तापर डिजाइन स्टार्ट हबो तापर डेवलपमेंट धीरे 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 करि गला कस्टमर पाखो तो हमें डिलीवर करथले बहुत लेट हो तो एबे से माने फॉलो करले आजाइल मेथोडोलॉजी जोटा के से माने धीरे धीरे करबेन से ना सब जाक दिन से माने डिवाइड कर देबे चंक बाय चंक मॉड्यूल बाय मॉड्यूल गोटे मॉड्यूल काम गोटे रिक्वायरमेंट आसला काम स्टार्ट हे तब से काम स्टार्ट हे कि तब संग संग गोटे काम प्रोसेस चलला ता भीतर आ गोटे आसला पुनी आ गोटे ता भीतर इंटीग्रेट कर फिर मॉड्यूल बाय मॉड्यूल काम प्रेस हो आमे वेट करिबान जे गोटे कंप्लीटली सरिले आमे आ गोटे स्टार्ट कर तो सेटा कोन कर बेसी टाइम नतला मार्केट रे डिलीवरी हो तो वर्तमान आजाइल मेथोडोलॉजी कोन होछ हम इमीडिएटली मॉड्यूल बाय मॉड्यूल चंक बाय चंक डेवलप इमीडिएटली आसला डेवलप कले हमें डिलीवर कर दो सेही पर्टिकुलर फंक्शन ता मेथड ता डेवलप कर मॉड्यूल राइट तब पुन नेक्स्ट आसला आ गुटे मॉड्यूल काम कले डिलीवर कले बस कंबाइन करिकि कंप्लीट एंटायर एप्लीकेशन डिलीवर कर दो राइट तो डेवऑप्स रे कोन होछ जो एंटायर प्रोसेस हमें देखुचे आकु हमें केमते ऑटोमेट करिवा right this entire process starting from planning to design to development to testing to production everything we are going to automate using DevOps okay बहुत मजा आसीबा एक्चुअली तुम बुझी पाइला ठीक से सेतमे हम बहुत डिटेल रे बुझौछि टेक्निक करिकरी पूरा डिटेल से इस एक्चुअली डेवऑप्स तमे कोन कला इजीली तमे जेतबे सेति पे डेवऑप्स माने फ्रेशर्स आउ कॉमन न्यू कमर्स माने पे डिफिकल्ट हो जाता है कारण तम के इन डेप्थ रे पढ़ाते के इन डेप्थ रे जानते खाली ओवरव्यू खाली पढ़े दी कि डेवऑप्स कोन कोन छाड़ते तापर से माने हजी जानी परंदो तो गोटे DevOps actually basically it will be easy for an experienced guy. गोटे पिला भी एक्सपीरियंस अछि से डेवलपमेंट प्रोसेस जानि छी राइट टेस्टिंग कोन जानि छी आ सिस्टम विषय नॉलेज अछि तो ताको पे इजी हो बट आज ए फ्रेशर जल्दी हमें सिखिबा तो हम फर्स्ट डेवलपमेंट लाइफ साइकिल जल्दी मु तुमको बुझे सेटा बुझिबा को पड़िबो रिक्वायरमेंट केमती करा हुए डेवलपमेंट कोन कोन हुए एप्लीकेशन कोन प्रोग्राम कोन ये सब बुझिबो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कोन स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज कोन राइट आ माने कोन ऑपरेटिंग सिस्टम कोन तो कोन आईपी एड्रेस कोन सब गोटे फ्रेशर्स को बुझिबा को पड़िबो तापर से जाई धीरे धीरे करो राइट तो हमर लास्ट बैच पिला तीन जण एठो बसी जो इंटर्न्स करछंती देखते ऊपर बसी काम करथन से आसिकरी एक्चुअली सी फ्रेशर्स से जॉइन करथले सी फ्रेशर्स जॉइन करथले से बर्तन बहुत बढ़िया काम करछंती इवन एक्सपीरियंस पिला को भी काट देबो सेही लेवल रे पढ़ा हैतला तो सेही बर्तन निजे निजे सब किछ ऑटोमेट करूछ हमर जति भी ऑफिस से काम होउची सब जगह बनसी सही लेवल तुमको सेही हिसाब रे पढ़ेबी जोटा टिकी नीति तुम जानी पारिबो आ जोटा बुझुचो सेटा तमे जाइकरी घरे चुपचाप बसी पड़िकरी इंस्टा और फेसबुक चलाओनी जाइकरी एटलीस्ट जाइकरी पढ़ी देखिबो तो माने सेही मोबाइल द्वारा सर्च करो कोन साकत एसडीएलसी मु जस्ट अल्प 5-10 मिनिट बजेली तो एसडीएलसी से बहुत सारा डॉक्यूमेंट मिल जियो तार सब बुलेट पॉइंट्स देखो तार पढ़ो ताटो किछि एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करो राइट तुम जे एक्स्ट्रा नॉलेज गेन करो तुम पे इजी हो जिनछड़ा सिखी की जल्दी काम करो right okay so who is a DevOps engineer हमें DevOps जानिले और DevOps काहे की यूज करबा भी जानिले राइट तो DevOps engineer की हबो काहे की who is a DevOps engineer right so about a DevOps engineer is a person who has एटा बहुत important just बुझ सेति पे अधे पिला फेल हो जाउछन DevOps जानि पारुना की so DevOps engineer is a person who has strong collaboration skill माने एटा गोटे टेक्नोलॉजी न कि लैंग्वेज न कि किछि न एटा गोटे स्किल जेटा निज भीतर आसे जोटा कि बिहेवियरल स्किल तुम केमती बिहेवियर करछ तुम के सिखियो छोट बड़े बापा मां को निजे निजे सिखि के आस्थान राइट बिहेवियर ता इनबिल्ट हेता है प्लस बाहर एक्सटर्नल हम किछि सिखिनो बट से कोलैबोरेशन स्किल गोटा होछि कि जोटा कि तुम केमती कोलैबोरेटिवली लोकन से मिंगलिंग हेकी तुम काम करछ
राइट कम्युनिकेशन केमती कोच पिलांग सहित केमती शेयर कोच काम केमती पिलांग हेल्प कोच कोलाबोरेटिवली वर्क कोच तारी विषय रे सब बुझाबो राइट तो सो कौन कोची a DevOps engineer is a person who has a strong collaboration skill and willing to adopt new technology and methodology in order to support implementations of DevOps practices in an organization and willing to adopt new tools and technologies. तो आमे कहवा जदि आमे लेजी हे घरे धर सपोज किछि परिवार अछि घरे रियल टाइम रे हम कहूछि किछि परिवार अछि बहुत कम परिवार अछि आ तमे जे छाड़ भात डालमा करके आज खाई दियो ये जीव मार्केट को परिवा आनिबो सेइतरे अछि खाई दियो रिक्वायरमेंट कोन हमको भोक लागले हम खाइबार अछि बट हम खाइबार अछि हमर इच्छा नै किछि हम जहा अछि सेइतरे हम चलै दोचे राइट बट तमर यदि इच्छा हो कि माइंडसेट चेंज हो जे मु एटा खाइबे मु जीवी घर बाहर जीवी अंडा आनिबी कि पनीर आनिबी रोसे करके खाइबी तर आइटम टा कोन बढ़ी गला तो मार्केट रिक्वायरमेंट हिसाब रे तमे जे मार्केट रो आनी कि यूज करबो नुवा टूल नुवा खाइबा आनी कि असले नुवा यूज कलो तो এটা কোন ଅଛି ନା willing to adopt new technology and tools ତ ତମେ କହିବ ନାଇଁ ମୋ ପାଖରେ ଏଇ ଟୁଲ ଅଛି ମୁଁ ଏହାକୁ ହିଁ ୟୁଜ କରିବି ସେ ଯାହା ବି ହେଇଥାଉ ସେ ଯେତେ ଟାଇମ ଲାଗୁଛି ଲାଗୁ ଯେତେ ମାନେ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି ହଉ ମୁଁ ଏଇ ଟୁଲ ହିଁ ୟୁଜ କରୁ तो कौन हम तुम डेवलप प्रोसेस ठीक से काम करनी तुम कौन कर सफ्टवेयर डिलीवरी लेट हम प्रोडक्ट माने एप्लिकेशन डिलीवरी कस्टमर को टाइम टू टाइम हो पार तो तुम जी जो डेवलप्स इंजीनियर जे जे विलिंग कर दो आडप्ट करने नुआ टेक्नोलोजी नुआ टूल नुआ नुआ किसी शिखिबो इम्प्लीमेंट करिवो केमती आमे कंपनी पाई कि निज कंपनी पाई ऑर्गेनाइजेशन पाई केते जल्दी और फास्ट प्रोडक्ट डिलीवर करि परिबा केते कॉस्ट इफेक्टिव करि परि राइट तो ई सब पाई जने गोटे डेवलप्स इंजीनियर जे एसବୁ ମାନେ ଆଡପ୍ଟ କରିପାରିବ ଜାଣିପାରିବ କୋଲାବୋରେସନ ସ୍କିଲ୍ସ ନୂଆ ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରିବା ପାଇଁ ମାଇଣ୍ଡ ସେଟ୍ ଚେଞ୍ଜ କରିବା ପାଇଁ will be a DevOps engineer. He or she will be a DevOps engineer. DevOps engineer ନୁହଁ ଯେ ମୁଁ ଗୋଟେ ଖାଲି ପ୍ରୋଗ୍ରାମିଂ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଶିଖିଗଲି କି ଟେକ୍ନୋଲୋଜି ଶିଖିଗଲି ହେଇଗଲା ମୁଁ ଆସି କାମ କରିବି ନା ବୁଝିପାରିବ ଏଟା ଗୋଟେ ଏଣ୍ଟାୟାରଲି ସ୍କିଲ୍ जोटा कि तुम भीतर निजे गढ़ तुम जानी पार एंड टू एंड हाँ मुझे ऑटोमेशन कहते गोटे कहते ऑटोमेशन कौन जो आम ऑटोमेशन करुचे राइट ऑटोमेशन माने जल्दी मैनुअली फैन बर्तमान ऑटोमेटिक बट ऑटोमेशन टा आम करबा केमिति राइट ऑटोमेशन टा हबो केमिति राइट तो ऑटोमेशन पई हमें दरकार कौन राइट तमे our problem टा हमें first you need to understand your problem properly तमे problem टा तमरो जदी ठीक से बुझी न पारिबो ताल तमे ऑटोमेट करि पारिबो राइट हमर प्रॉब्लम थिला कोन ना धर सपोज फैन कथा पड़ जदी हमें कथा हबा तो प्रॉब्लम थिला कोन हमने फैन हाथ रे मेंशन तो बुलोथले हाथ रे तो हैंड फैन यूज करथले बेसी समय बुलेबा हाथ पेन पड़ला that is the problem we cannot swing it for more time right we cannot rotate it for more time our hand was paining right तो सेतल कोन होतला तो सेति पय हमें भाबिले कि प्रॉब्लम को हमें केमति सॉल्व करबा that's the problem and the solutions is fine right तो सेटा हमें ऑटोमेशन करू तो ऑटोमेशन तमे करबा पहले तमे आगे प्रॉब्लम टा को भलो बुझिबो आ से प्रॉब्लम टा जो होची कोन पय होची ताल मैनुअल प्रोसेस टा कोन मैनुअल प्रोसेस टा कोन देन तमे ऑटोमेशन से मैनुअल प्रोसेस टा तमे भलो भाबे बुझिबो कोन केमिति कोन मैनुअली होची देन तमे ऑटोमेट राइट अल्दी मैनुअल प्रोसेस टा बुझी पारिबनी तो प्रॉब्लम टा बुझी पारिबनी तार सॉल्यूशन केन बात करनी तार सॉल्यूशन केन बात करनी राइट तो मैनुअल प्रोसेस टा को बुझिबार पड़िबो राइट सो फ्रॉम ए टेक्निकल पर्सपेक्टिव हमें देखियो जीव DevOps engineer should have a good understanding of systems जोटा हम कहउतली good understanding of systems understanding of systems automation tools continuous integration tools version control system monitoring observability tools networking project management software the roles of okay कौन देखो शिखिया पड़िबा तुमको सिस्टम में शिखिबा को पड़िबनी माने आइडियाज थिबा दरकार सिस्टम्स ऑटोमेशन टूल्स जानिबा किछि कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन टूल्स वर्जन कंट्रोल सिस्टम शिखिबो देखो सिस्टम विषय आइडिया पाइबो ऑटोमेशन टूल शिखिबो कंटीन्यूअस इंटीग्रेशन टूल शिखिबो
वर्जन कंट्रोल सिस्टम शिखिबो मॉनिटरिंग शिखिबो ऑब्जर्वेबिलिटी टूल शिखिबो नेटवर्किंग विषय आइडियाज थिबा दरकार मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जानिबार अछि कि प्रोजेक्ट मैनेजमेंट कराबो ओके ये सब डिटेल्स रे तुमको जानिबाकू पड़िबो ओके पर तुम भाबरे कि एति सब दिन सब मने ना गोटे टूल शिखिबो बहुत इजीली तुम जान परिबो बट सिस्टम टा जान कोन पय तमे हला तमे जदि भाबिबो ना एति सारा मते पढिबा को ସେଇଠି ଷ୍ଟପ୍ କରିଦବ ଦିଗଲ ସାର ତ ଏସବୁ ଇଜିଲି ଆମେ କେମିତି କରିପାରିବା ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ତୁମକୁ ପଢେଇଦେବି ଧୀରେ ଧୀରେ step by step ତମେ ଆଣିଯିବ the role of a DevOps engineer involves designing and developing continuous integration. The role of a DevOps engineer involves designing and developing of continuous integration and continuous delivery pipelines that can handle small updates or releases with minimal manual interventions. With minimal manual interventions. जोटी की manual intervention किछि रहिबो right जेटी की हमें easily both that can handle small updates and releases with minimal manual interventions. And what it says, DevOps engineer involves designing, developing continuous integration and continuous delivery. So continuous delivery, I mean, continuously deliver something. We are delivering something continuously. Continuous integrations, one the process that you chaluchi. So, same example, let's see. Continuous integrations, छोटा की फाइल चालू ची केमिति currently ତା ପାଇଁ କଣ ଦରକାର equipment କଣ ଦରକାର wire ଦରକାର switch ଦରକାର right switch wire and it should connect to the electricity and then some capacitor machinery equipments ଦରକାର ବୁଲେଇବା ପାଇଁ right ତ ଏଇ ଯୋଉ integrate ହେଇଛି ଏଟା continuous integrations ଚାଲିଛି ତାର କିଛି changes ଆସିଲା ତାକୁ continuously କେମିତି ସେ changes ଟାକୁ change କରି ଆଉ ଆମେ electricity ଯୋଉ constantly ଯାଉ ଯଦି କିଛି broken ହେଲା ତାର ନୂଆ ତାର କେମିତି continuous integration process ଟା ହେଇଯାଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଚାଲୁଛି ଯୋଉଟା ଆମର continuous delivery so continuous integrations will be done once ତମେ continuous integrations means set of tools set of ମାନେ सर्वर को machine सहित को सर्वर सहित को tool यूज हो ताको integrate कलो गोटे single central tool सहित then गोटे tool यूज हो जोटा continuous deliver करे first integrations of integrate करियो then it will deliver then continuous deliver process which will continuously deliver something to the some environment it am just overview in real life पर कोची but technically तुमको पर in details से बुझेबी integration केमती कराबो आउ delivery माने कोन delivery कोठी की कराबो delivery को आजियो और deployment कोन right okay top 7 DevOps trends ମୁଁ just quickly quoted कहि दउची après बेसी करे DevSecOps माने DevOps रो DevSecOps security operations so security in the current market is highly you can say adaptable or highly used because without security nothing can be go smoothly right so security is must everything whatever you are doing security is must so DevSecOps, that is which is going trends in the market, with security being one of the most significant concerns in the digital age, enterprise have integrated DevSecOps lifecycle to enhance it further. तमें जो DevOps सीखुचे तादरे DevSecOps रहुची जोटा कि security is must. Development, security, operations. DevSecOps, development, security, operations. So combinations of DevSecOps. Okay, DevSecOps. And it has been used to streamlining the governance and observability as well okay so next comes serverless computing तो काली हमें कथा होतले serverless computing ऊपर right serverless computing कोन जोटी की सर्वर यूज होबनी right serverless तो सर्वर टा में कोन यूज कोन पे यूज कर बड़े प्रोसेस करिया पे रिक्वेस्ट जोटा की रिक्वेस्ट सेंड बाय द क्लाइंट right then process होइला पर सर्वर गोटे रेस्पॉन्स दबो तो सेटा वर्तमान आ सर्वर आमे तने सर्वरलेस कंप्यूटिंग यूज कराउची जोटा कि इज अ वे टू डेवलप एंड रन सर्विसेज एप्लीकेशन विदाउट टेकिंग सर्वर्स इनटू कंसीडरेशंस जेमति कि AWS lambda जेमति गूगल फॉर्मेशंस क्लाउड फॉर्मेशंस ए सब डिटेल्स हम यूज करछे जोथरि कि हमें सर्वर दरकार पड़ुनी ऑटोमेटिकली एपीआई से फंक्शन ता कोन करछि जनरेट करछि राइट next come microservices architecture microservices हमें पढ़िबा next
Docker और Kubernetes क्लास रे माइक्रो सर्विस पढ़ियो बट माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर कौन माने जोटा कि आमे मार्केट रे माइक्रो मींस कौन छोटो स्मॉल माइक्रो सर्विस छोट छोट सर्विस तो आगे जो सर्विस टा हमें डिलीवर करतले as one right now we are going to break it to small pieces and combine together and deliver microservices architecture that we'll just see what this microservices architecture and what is the monolithic architecture. So that is we'll discuss in our Docker and Kubernetes classes. So microservice architecture often referred to as microservices is currently being extensively used in the IT sector. That is the trend going on. Customized to accommodate the latest DevOps market trends. So the latest DevOps trends is going on. The next trends AI ops. AI means artificial intelligence operations, right? So ML ops and AI ops that is also newer ଗୋଟେ ନୂଆ DevOps trends ଯୋଉଟା କି ପ୍ରାୟ ସବୁ AI ops, right? Once low code applications. आजकल देखते ସବୁ ମାନେ କଣ drag and drop କରିଦଉଛନ୍ତି ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଯେକୌଣସି application ରେ କୋଡ ଆଉ ଲେଖିବାକୁ ପଡୁନି just drag and drop କଲେ ଡିଜାଇନ କରିଦେଲେ ଆଣିକିରି ତମ UI ଅଛି ଅଲରେଡି ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଅଛି ଆଣି ଥୋଇଦେଲ ହେଇଗଲା ଫ୍ରେମୱାର୍କ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ରାଇଟ ଯେମିତି କାଲି କଥା ହଉଥିଲା ଆମେ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଯେମିତି ଜାଭା ଆମେ ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ଲେଖୁଛେ ଜାଭାସ୍କ୍ରିପ୍ଟ ରିଆକ୍ଟ ଜେଏସ୍ କିଛି ଗୋଟେ ଫ୍ରେମୱାର୍କ HTML ଆଉ CSS ପାଇଁ ବୁଟଷ୍ଟ୍ରାପ ଗୋଟେ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଆମେ ଫ୍ରେମୱାର୍କ ଗୋଟେ ଆଣି ପକେଇଦେଲେ କଣ ଆମେ କୋଡ ଆଉ ଏତେ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବନି ଯୋଉଠି କି 50 ଲାଇନ କୋଡ ଆମେ ଲେଖୁଥିଲେ ସେ ଗୋଟେ ସିଙ୍ଗଲ ଲାଇନ କୋଡ ଆଣି ପକେଇଦେଲେ କାମ ସରିବ ଆଉ 50 ଲାଇନ କୋଡ କି 100 ଲାଇନ କୋଡ ଆମକୁ ଲେଖିବାକୁ ପଡିବ କାରଣ ଗୋଟେ ମେଥଡ ଗୋଟେ ଫଙ୍କସନ will do everything. Okay. Next, GitOps. Git ଗୋଟେ ହେଲା source code management repository. Okay. Repository systems, version control system, Git. तो version control system ଟା ଆମେ ଚେକ୍ କରିବା କେମିତି କଣ GitOps ରହୁଛି. GitOps happens ଠିକ ରେ ଦେଖାଉଛି ତ ମତେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଆସୁଛି ଦେଖାଉଛି. GitOps happens to be one of the best ଦେଖାଉଛି ନା happens to be one of the best DevOps new trends that have been added to DevOps workflow. It helps control, monitor, and automate the infrastructure. So GitOps also one of the trends which is going on the market. Kubernetes. This is highly demanded in the market now, and Kubernetes engineers. Using Kubernetes, we are going to use microservices. With the help of Kubernetes, we are going to achieve microservices. Okay. So Kubernetes helps facilitate the cross-functional actions and make sure that there is minimum deployment downtime and align with the standard and best DevOps practices. So जितने भी आमे देखुचे अपग्रेड होची WhatsApp, Facebook ये सब तो देखुचे किसी गोटे डाउनटाइम आमे देखुचे स्लोनेस पाउन बहुत रेयर राइट तब बल्कि आमे देखुने किसी डाउनटाइम इमीडिएटली अपग्रेड हे होची ये सब ଯେମିତି କି ନେଟଫ୍ଲିକ୍ସ ହଉ ୱେବ ଆପ୍ଲିକେସନ କଥା ମୁଁ କହୁଛି ଯୋଉଟା କି ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଆପ୍ଲିକେସନ ତ ଆମ ମୋବାଇଲ ରହିଲା ଆମକୁ ହିଁ ଅପଗ୍ରେଡ କରିବାକୁ ପଡିବ ରାଇଟ୍ ମାନୁଆଲି ଯିବ ସିଲେକ୍ଟ କରି ଅପଗ୍ରେଡ କରିବ ବଟ୍ ଯୋଉମାନେ ଅଟୋମେଟିକ ହଉ ୱେବ ଆପ୍ଲିକେସନ ହଉ ଅଟୋମେଟିକାଲ ଯୋଉ ସେମାନେ କରୁଛନ୍ତି କେମିତି ଜଣା ହିଁ ପଡିବନି ଯେମିତି ଆମାଜନ ଇ କମର୍ସ ସାଇଟ୍ ଆମାଜନ ଆମେ ୟୁଜ କରୁଛେ ଆମାଜନ ତାଙ୍କର ସେମାନେ ଅଟୋମେଟ କରୁଛନ୍ତି ରେଗୁଲାରଲି ଅପଗ୍ରେଡ କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ପାର୍ଟ ତ ସେଟା କଣ କରୁଛନ୍ତି ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି ଆମେ କେବେ ଡାଉନ ଟାଇମ ପାଉନୁ କାରଣ ସେମାନେ ଫଙ୍କସନ ୟୁଜ କରୁଛନ୍ତି methodology ସବୁ sorry tools like Kubernetes and all which will help you the very minimum deployment downtime କଣ ଅଛି deployment downtime ଟା କଣ deployment କଣ deployment we call it as release okay deployment also we call it as release so deployment ମାନେ କଣ ଗୋଟେ deploy କରିବା right deployment ଗୋଟେ ନେଇ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିବା deploy କରିବା right ତ deployment डाउन टाइम कोचिंग ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୋଟେ ନର୍ମାଲି ସଫ୍ଟୱେୟାର ଗୋଟେ ଯଦି ଡେପ୍ଲୟ କରୁଛେ ଡେପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ କରୁଛେ ତ କଣ ଗୋଟେ ମେସିନ ରେ ଗୋଟେ ସର୍ଭର ରେ ଡେପ୍ଲୟ କରିବା ରାଇଟ୍ ତ ଯେତେବେଳେ ସର୍ଭର ରେ ଡେପ୍ଲୟ କରୁଛେ
आगुरी कौन होता है सर्वर को फर्स्ट बंद करा होता सर्वर जैसे एप्लीकेशन वी हैव टू स्टॉप द सर्वर देन do the changes whatever things application stop the application sorry not stop the server stop server करते ଆମେ କେମିତି deploy କରିବ stop the application जो application ଆମେ deploy କରିବା server ରେ stop କରୁଥିଲେ ସେ application को first stop କରୁଥିଲେ application ଚାଲୁ ନଥିଲା ଯଦି ଯଦି Amazon suppose deploy କରିବ ଗୋଟେ server ରେ deploy ହବ ତ server କୁ first କଣ କରୁଥିଲେ ଆମେ क्लीन କରୁଥିଲେ କି ଯୋଉ application run ହଉଛି ତାକୁ ସବୁ ଆମେ stop କରୁଥିଲେ ସବୁ application stop କରୁଥିଲେ ତ server ରେ ତାପରେ କଣ କରୁଥିଲେ ନା ଯୋଉ ନୂଆ version ଆସୁଥିଲା ତାକୁ release କରାଉଥିଲେ ତ ସେତେବେଳେ କଣ ହଉଥିଲା ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଡେପ୍ଲୟ କରାଉଥିଲା ବା ରିଲିଜ କରାଉଥିଲା ଯୋଉ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋସେସ ଟା ଯେତିକି ସମୟ ଲାଗୁଥିଲା ସେତିକି ସମୟ ଆମର ଡାଉନ ଟାଇମ ରହୁଥିଲା ଆମେ ଆପ୍ଲିକେସନ ଆକ୍ସେସ କରିପାରୁନଥିଲୁ କାରଣ ସେ ସର୍ଭରରେ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ କାମ ତାକୁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମେଲ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ମେସେଜ ଆସିଥିବ ମେଲ ଆସୁ ନା ସର୍ଭର ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ଇଜ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ରାଇଟ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଇଜ ଗୋଇଂ ଅନ୍ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ୱାଇ ଏତିକିରୁ ଏତିକି ତମକୁ ଆପ୍ଲିକେସନ ଟାଇମ ମାନେ ମିଳିବନି ଆପ୍ଲିକେସନ ୟୁ କ୍ୟାନଟ ଆକ୍ସେସ ଦ ଆପ୍ଲିକେସନ ତାମାନେ ସେତିକି ଟାଇମରେ ସେମାନେ ନୂଆ ଅପଗ୍ରେଡ କରନ୍ତି କିମ୍ବା ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରନ୍ତି तो सही टाइम रे तुमको ताका सर्वर टा ताका एप्लीकेशन टा एक्सेस हबो तो से सर्वर रे एतले काम करथि राइट तो कुबरनेटिस रे कोन होची ना कुबरनेटिस जो डाउन टाइम टा ताको हटै देउछ केमति ना से तार बहुत सारा टेक्निक अछि हम कुबरनेटिस एतले पढिबा कि जानिबा तो जानिबा कुबरनेटिस तो ताकर से रिलीज जो कोची से डाउन टाइम अब रखुनी माने कोन होची जो एप्लीकेशन से डिप्लॉय करूची तो बिफोर डूइंग एनी चेंजेस से फर्स्ट कौन करछि ना बिफोर रिमूविंग एनी चेंजेस तो आमे कौन करतो नॉर्मल डेवलपमेंट फर्स्ट स्टॉप करूतले तापर डेवलप करतले ये कौन करना फर्स्ट डेवलप करिवो तापर स्टॉप करू फर्स्ट डिप्लॉय करिवो तापर स्टॉप कर ता माने कोन ता हम गोटे कंटेनराइजेशन टेक्नोलॉजी हम तळे सिखिबी कंटेनराइजेशन टेक्निक बा हमर सेठी सिखिबो कंटेनराइजेशन माने कंटेनर गोटे जो गोटे कंटेनर कंटेनर कोन नॉर्मल हमर किचन में तो कंटेनर अछि माने जोटा डेक्ची फेक्ची की होगी कंसा कौन कौन ताटिया फाटिया हाँ तार सब आम कौन सब जिनस रखुଛୁ राइट तो तार सेटा गोटे कंटेनर माने जो पर्टिकुलर गोटे धर वाटर गोटे बॉटल रहला बॉटल गोटे कंटेनर जोटा कि वाटर केवल कंटेन करिवो जे कंटेन करूची किछि थिंग राइट तो हमर जेमति कुबरनेटिस आ डॉकर रे कंटेनर आ पॉड्स रो टेक्निक ता आसीबो जोटा कांसेप्ट आसीबो जो तरीके हमें पर्टिकुलर एप्लीकेशंस ता यूज करिवो कंटेन करिवो सेही कंटेनर विल होल्ड्स दैट पर्टिकुलर एप्लीकेशन तो हमें गोटे कंटेनर स्टॉप करी आगु आ गोटे कंटेनर गोटे पॉड आरंभ कर देथिबा ता माने कोन हला माने सेही पॉड ता ऑलरेडी लोग नुआ पॉड को एक्सेस कले पुराना पॉड को हटे दबा ता माने हमर एप्लीकेशन डाउन ता हम रहिलेन एटा कंटेनर अछि गोटे गोटे सेम एप्लीकेशन एते भी सेम एप्लीकेशन अछि पुराना एप्लीकेशन नुआ एप्लीकेशन तो पुराना एप्लीकेशन हटे आगु हमें नुआ एप्लीकेशन आनी करी रखी दे करी ताको मैप कर दला पर तो लोग नुआ एप्लीकेशन पाई गले पुराना एप्लीकेशन हटे दो डाउन टाइम हम प्रॉब्लम नहीं right same thing here suppose old new right तो the old applications are the आमे कोन बर्तमान कस्टमर आको यूज करछन कस्टमर आको यूज करछन ओल्ड एप्लीकेशन तो कुबरनेटिस द्वारा कोन होछि ना से माने कुबरनेटिस फर्स्ट डेवलप कर दोछि न्यू एप्लीकेशन जेतोले लोक माने यूज करिया स्टार्ट करतले न्यू एप्लीकेशन जेतोले काम तासी गला तो कोन ओल्ड एप्लीकेशन को हटे गला तो लोक माने कोन न्यू एप्लीकेशन ये जो प्रोसेस टा से करछि माने डेवलपमेंट प्रोसेस टा हम सिखिबा केमति रोल 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 आउट करूछि रोल आउट प्रोसेस कोन से रोल आउट करूछि किबा डेवलपमेंट प्रोसेस टा सेटा हमें कंप्लीटली सिखले जानि परियो जे केमिति एक्चुअली लो डाउन टाइम मिनिमम डाउन टाइम रे डेवलपमेंट होछि ठीक अछि टूल्स ऑन हाई डिमांड कौन कौन टूल्स हमें सिखिबा को टूल्स सब हाई डिमांड अछि फर्स्ट है गिट गिट होची कोन यूज होची सोर्स कोड मैनेजमेंट एंड कोड रिपोजिटरी दिस इज अ वर्जन कंट्रोल मैनेजमेंट और source code management or version control repository okay so version control system it is a version control system or it's a code repository github is a remote repository source code management but remote repository okay कौन tool use करिबा हमें git then comes github git hela source code management ପାଇଁ ବା code repository then comes github source code repository but remote repository remote ମାନେ
टीवी रिमोट की एसी रिमोट नो रिमोट माने एटी रिमोट होची जोटा कि रिमोट एरिया माने रिमोट एरिया माने कोन जोटा कि बहुत दूर अच्छी रिमोट एरिया जोटा कि पहुंचवा भी डिफिकल्ट जोटा कि गोटे जगह माने नॉट पहुंचवा डिफिकल्ट आजकल तो रिमोट एरिया पहुंचे बहुत इजी हो गलानी तो रिमोट एरिया जोटा कि बाहर गोटे जगह अच्छी राइट तो यहाँ रिमोट एरिया रिमोट रिपोजिटरी मीन्स रिमोटली यू आर स्टोरिंग इन द क्लाउड इन डिफरेंट प्लेसेस ओके गोटे क्लाउड डिफरेंट सर्विस डिफरेंट प्लेसेस रे स्टोर हो गिट है कौन कहल लोकल रेपोजिटरी गिट इज यूज्ड फॉर लोकल रेपोजिटरी रेपोजिटरी फर्स्ट कौन व्हाट इज रेपोजिटरी what is version control system a repository is to store something to store the source code not something to store the source code to manage to keep your all your source code कौन जोटा कि हमर डेवलपर डेवलप करले कौन करिवो कोड लिखिवो राइट सही कोड को हमें स्टोर करबा कोड गोटे रेपोजिटरी तो नॉर्मली गोटे जब तुम रेपोजिटरी यूज करूना तो तुम जो कोड लिखुछ कोड धर तुम गोटे डेवलपर तुम रेपोजिटरी यूज करूना तो तुम कोडी कोड रखिवो किछ गोटे तुम लिखिलो डेवलपमेंट कथा छाड़ा किछ गोटे लिखिलो तुम गोटे डॉक्यूमेंट बनेलो तो कोड स्टोर करियो स्टोरेज रे तुम फोल्डर सिस्टम को गोटे फोल्डर क्रिएट करियो फोल्डर भीतर तुम से पर्टिकुलर फाइल टाइप रखिलो से सिस्टम माने से सिस्टम रे रखिलो तापर कोन होची ना तुम ସେଇଟା କଣ କରିବ ନା ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତମ ସିଷ୍ଟମ ରେ ହିଁ ତମେ ରଖିଲ ରାଇଟ ତ ନେକ୍ସଟ କିଛି ଅପଡେଟ କଲ ସେ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ କିଛି ଅପଡେଟ କଲ କଣ ହବ ସେଟା ଓଭର ରାଇଟ କରିଯିବ प्रीवियस वर्जन तुम चाहिए कि आनीपर कारण तुम नुआ फाइल अपडेट हो जाए आ प्रीवियस वर्जन पाइबन बट रेपोजिटरी सिस्टम रे कौन होना तुम वर्जन कंट्रोल मैनेजमेंट हो वर्जन कंट्रोल जोटा कि वर्जन क्रिएट कर तुमने एबे धर गोटे किसी कोड लिखिछ 5-10 लाइन रो किछि नोट करिछ ताकू आ गोटे वर्जन क्रिएट होल आ गोटे किछि 5-10 लाइन रो नोट लिखिलो तो ताकू अपडेट कर देलो वर्जन कंट्रोल रेपोजिटरी रखिलो स्टोर कलो तो स्टोर करछ वर्जन कंट्रोल तार एक्टिव होछि गिट रो रहउछि जोटा कि तुम धर अपडेट कल तार गोटे नुआ वर्जन क्रिएट हो फर्स्ट अच्छी 1 वर्जन 1.0 देन 1.1 वर्जन क्रिएट हो तो तुम नुआ वर्जन देखिल तुम चाहूँ जदि मु पुराना वर्जन कौन थिला कौन कोड लिखा है देखियो 1.0 प्रीवियस वर्जन को पढ़ो तो रेपोजिटरी रो मैनेजमेंट इटा पे यूज करा तो डेवलपर जो कोड लिखुछ कोड रो किछि प्रॉब्लम आसला से कोन करबो ना प्रीवियस वर्जन को जाइए आनी कि कोड चेंज कर पाए तो एते वर्जन कंट्रोल बहुत इंपोर्टेंट एंड आज का डेट रे विदाउट वर्जन कंट्रोल नथिंग इज हैपनिंग सब इन डेवलपमेंट एरिया इन सॉफ्टवेयर लाइन आई एम टॉकिंग अबाउट डेवऑप्स इंजीनियर तमे आज तमे ऑटोमेशन करबा को जाउछ बा कोड लिखिबो तो तम पई निहाती भाबरे तमे रिपोजिटरी मैनेजमेंट चाहिए राइट तो वर्जन कंट्रोल तो सोर्स कोड रिपोजिटरी और सोर्स कोड मैनेजमेंट देन गिटहब इज द remote repository जोटा कि git is for used for local repository तुम मशीन रे तुम इंस्टॉल करिवो लैपटॉप रे सेठी स्टोर हबो कोड बट तुम कोड को तुम चाहूछ कोलैबोरेटिवली शेयर विद इन द टीम तुम कहतली जे टीम टा में सिंगल काम करूनी ना त हमें गोटे टीम रे काम करूछ त हमें जो कोड लिखुची थोड़ी हम पई लिखुची हम गोटे प्रोजेक्ट बनाउछे त टीम रे समस्त को प्रोजेक्ट रे कोन इंप्रूव माने इन्वॉल्वमेंट रहबा दरकार आ कंट्रीब्यूशंस रहबा दरकार तो तुम कंट्रीब्यूट तुम सिस्टम रे रखिबो तले मु केमती तुम सहित कोड लिखि परिबी तो तुम कोड जानि परिबी तो ताको हमें कोन करबा ना रिमोट रिपोजिटरी स्टोर करबा गोटे अलग जगह सोर्स कोड मैनेजर रिमोटली तो कोन करबा ना आउ जने यूजर धर शुभश्री ताको कोड लिखि रिमोट रे रखि देले तो राजश्री चाहउछंती से कोड सेहित रे आ ताको कोड रखिया पे माने बनेया पे सेहित रे माने ताकर जो पीस लिखि देले कोड टा मॉड्यूल टा से मोटा से प्रोजेक्ट रे रहइबो तो से कोन करे से प्रोजेक्ट एक्सेस करी सेहित रे संग मॉड्यूल तो कोलैबोरेटिवली तुम को ताकर समस्त तुम कोलैबोरेटिवली वे रे काम करि पाइ तो सेति पे हमें रिमोट रिपोजिटरी हमको दरकार ओके तापर आछि जेनकिंस और Jenkins okay what is this Jenkins is a build management tool for CI/CD okay CI/CD is continuous integration and continuous delivery okay for continuous integration and continuous delivery we are going to use Jenkins for build management
यूनिट टेस्ट एंड क्वालिटी इंटीग्रेशंस मैं सब डिटेल्स CI/CD कोन हम ये क्लासेस रे हम बुझे दू डेवऑप्स क्लासेस ओके देन वी आर गोइंग टू यूज Ansible to use configuration management and continuous deployment. Configuration management and continuous deployment. So configuration management कौन जोटा कि configurations तुम जान तो configurations कौन ପାଇଁ करा हुए why we need configuration तमे गोटे configuration example देलो तमे रेगुलर डिटेल्स से कौन कौन सब configuration जान छ माने गोटे example देलो तुम डेली यूज करछो डे टू डे लाइफ ता बिना तुम रही ही परिबन हां गोटा हां सेटा तो हम छाड़ आवड़े सेटा भी आसु मोबाइल नॉर्मल मोबाइल फोन तो मोबाइल फोन में कॉन्फ़िगरेशन काई कहूची मोबाइल फोन रे तुम सेटिंग्स कॉन्फ़िगर करछ ना नाही किछि गोटे एप्लीकेशन जेतबे आनुछ तक सेटिंग फेटिंग चेंज करछ ना नाही कॉन्फ़िगर करछ ना नाही ता कोन कॉन्फ़िगरेशन तमे किछि कॉन्फ़िगर करछ तमे किछि कॉन्फ़िगर करछ राइट द कॉन्फ़िगरेशन तो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट तमे गोटे मोबाइल आइला पर फर्स्ट ताकू कोन करछ ता कॉन्फ़िगर सेटिंग करछ तार कोन सब कलर केते रहइबो ब्राइटनेस केते रहइबो कोन सेटिंग रहइबो ईमेल एड्रेस कोन तार लॉक्स फिंगरप्रिंट फेस आईडी सब सेटअप करूछ तमे कॉन्फ़िगरेशंस करूछ राइट सिस्टम से कॉन्फ़िगरेशन करूछ सेमती एंसिबल द्वारा आमे कोन गोटे मशीन नबा गोटे सर्वर नबा राइट गोटे मशीन किछि डेवलपमेंट करिया आगु किछि एप्लीकेशन डेवलपमेंट करिया आगु ताको आमे कॉन्फ़िगर करिया सेटअप करिया राइट तो से सब कॉन्फ़िगरेशन ताको आमे यूज करिया एंसिबल रे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट बुझी पाइला कॉन्फ़िगरेशन ता कोन जोटा कि तमे मोबाइल तमे कॉन्फ़िगरेशन करूछ नुवा मोबाइल आनलो गोटे कॉन्फ़िगर करिवो राइट मु चाहेबी गोटे ऑटोमेटिक कर दे गोटे टूल रे मोबाइल ता खाली फोपाड़ दो ता भीतर से कॉन्फ़िगर न दे जाए बेला मोबाइल कनेक्ट कर देलो से टूल रे से कोन करले बस कॉन्फ़िगरेशन कर देलो तुम दे दो दैट इज वी आर गोइंग टू यूज एंसिबल तो हमें सर्वर जति मशीन यूज करबे सर्वर ता केमती ऑटोमेटेड वे रे कॉन्फ़िगर करि परिबा गोटे एप्लीकेशन डेवलपमेंट पूर्वरु केमती कॉन्फ़िगर करि परिबा सेमती कंटीन्यूअस डेवलपमेंट हम जेमती कंटीन्यूअस डिलीवरी कले गोटे जगह गोटे डिलीवरी कंटीन्यूअस डेवलपमेंट भी होउची जोटा कि हमें कंटीन्यूअसली डिप्लॉय करछे गोटे एनवायरनमेंट को राइट तो कंटीन्यूअस डेवलपमेंट कोन होउची ना कंटीन्यूअस डेवलपमेंट पूर्वरु हमको कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करबा पड़िबो फर्स्ट कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट देन कंटीन्यूअस डिप्लॉयमेंट ओके अजे डेवलपमेंट पूर्वरु हमें मैनेज कॉन्फ़िगरेशन सेटअप करा ही नथिबो कोन प्रॉब्लम आसीबो चलीबोनी ठीक से राइट तमे गोटे बाइक चलेबा आगुरु कोन थिबा दरकार फर्स्ट रास्ता थिबा दरकार फर्स्ट बाइक चलेबा पई हेले तुम गोटे फर्स्ट भलो रास्ता थिबा दरकार ना तो रास्ता पई तमे माने कोन पूरा कंप्लीट सही टाइप रो रास्ता देखना आपका डिपेंड करछि तमे को टाइप रो बाइक आणछो जब तमे आणछो बाइक आणछो जे भी माने रेसिंग बाइक तो तमे आउ से आबडा काबडा रास्ता रे चलै परिबन तम पई पूरा पक्का रास्ता थिबा दरकार राइट तो तमे बाइक रेसिंग स्टार्ट करबा आगु फर्स्ट रास्ता टा प्लान करथिबा दरकार तो कोन से एप्लीकेशन डिप्लॉय करबा आगु जेमति एनवायरनमेंट सेटअप दिबा दरकार तो जे एनवायरनमेंट सेटअप टा करिवो के Ansible ही एनवायरनमेंट सेटअप करिवो कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट करिके देन डिप्लॉय करिवो राइट नेक्स्ट कम्स डॉकर तो हम जो माइक्रो सर्विसेज है कंटेनर विषय रे कथा होतले तो सेटाला डॉकर यूज करिकरी कंटेनराइजेशंस वी कैन कीप द कंटेनराइजेशंस सो कंटेनराइज योर एप्लीकेशन हमें ता विषय रे डिटेल्स रे जानिबा डॉकर क्लासेस से केमती कंटेनराइज करा होची नेक्स्ट कम्स कुबरनेटिस रे हमें जो कंटेनर सब क्रिएट करबा डॉकर रे राइट जति कंटेनर क्रिएट करबा से कंटेनर को मैनेज करबा पई हमें यूज करबा कुबरनेटिस इज ए कंटेनर ऑर्केस्ट्रेट करबा पई ऑर्केस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म एंड एप्लीकेशन डेवलपमेंट फॉर एंड यूजेस माइक्रो सर्विसेज with Kubernetes we are going to use microservice and then हमें कौन देख सिखिबा टेराफॉर्म हमें जो क्लाउड सिखुचे बर्तमान हमें जदि क्लाउड करिबा हमें मैनुअली क्लाउड लॉगिन करी मैनुअली गोटे दिटा क्लाउड सर्विसेज यूज करिबा राइट से क्लाउड सर्विस ता कोन होची ना कंपनी माने कोन कहउची ना ताकर धर गोटे क्लाउड रे गोटे सिंपल एग्जांपल दोउची हमें गोटे सर्विस नबा क्लाउड सर्विस सपोज EC2 गोटे हमें नेले गोटे इंस्टेंस गोटे क्रिएट कले AWS
गोटे हो कि दी चार मशीन क्रिएट कर तो हमें मैनुअली लॉगिन कले सिलेक्ट कले कौन कौन ऑप्शन हमको दरकार तो हिसाब से मशीन जाके आइले राइट तो टेराफॉर्म रो काम कौन ना सी कौन कहे कॉन्फ़िगरेशन मैनेजमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर ऑटोमेशन से क्लाउड सर्विस जो मैनुअली पांचटा सर्वर आनले से जो सर्वर जहां जहां इंफॉर्मेशन दरकार हमें कोड लिखि दबा टेराफॉर्म रे कोड लिखि देले सेटा एग्जीक्यूट करबो से कौन करना ऑटोमेटिकली क्लाउड सर्विस रे लॉगिन करिवो हम पई जहां जहां मशीन दरकार से हमको क्रिएट कर दे माने देखो हमें जहां चाहिए सेया करि पारि एक्चुअली दैट इज व्हाई डेवऑप्स इज अ माइंडसेट तुम कौन चाहो छ माने व्हाट यू वांट टू अचीव इट राइट तुम रिक्वायरमेंट हिसाब से तुम अचीव करू छ कौन करबा को चाहो छ हाउ टू अचीव इट so you can set up everything so it's a set of tools we are going to use in order to do and these are the tools are on high demands जोटा कि बहुत डिमांड अच्छी मार्केट रे ये सेम टाइप रो टूल मार्केट रे हंड्रेड्स मोर देन हंड्रेड्स आते हैं बहुत सारा टूल अच्छी मार्केट बट जो जति की हाईली डिमांडेड टूल जोटा कि हम यूज होची मार्केट रे स्प्राई कंपनी यूज करछन से को हम करबा चाहछे ठीक अछि डेवऑप्स कैरियर जति पई बहुत सारा देखियो मार्केट रे डेवऑप्स रो बहुत रिक्वायरमेंट होची बहुत डेवऑप्स कैरियर the DevOps field is currently highly sought after option and in IT industry due to its potential and high salaries and career growth. Okay, DevOps field. Current days, almost all companies adopting DevOps culture, and all of them are migrating their infrastructure into cloud. All the companies they are adopting the DevOps culture and migrating their infrastructure. Infrastructure माने जो नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर सर्वर्स मशीन्स नेटवर्क्स एवरीथिंग तमे गोटे जेमि खाली कहउतली गोटे कंपनी सेटअप करिया पे तमे गोटे इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करिया पड़ियो तपई नेटवर्क नवा पड़ियो मशीन नवा पड़ियो सर्वर नवा पड़ियो स्टोरेज नवा पड़ियो बहुत सारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करिया पड़ियो तापर जाई तमे प्लेटफॉर्म क्रिएट करियो प्लेटफॉर्म पर तमे सॉफ्टवेयर डेवलप करियो राइट तो से सब कोन करछ ना वर्तमान कंपनी माने सब क्लाउड को माइग्रेट करलेनी आ तांकर मते मते इधर मते ये ऑफिस सेटअप करिया अछि मु जदि मु इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करियो ऑफिस तो जगह हबनी मते कौन करिया पड़ियो आउ गोटे साइट रे घर नवा पड़ियो सेठी मु सर्वर सेटअप करबी इंफ्रास्ट्रक्चर सेटअप करी तापर मते चलेबी तो अननेसेसरी काइन भी मते माने कंपनी कोन चाहूची तो बर्तमान क्लाउड को पड़ियो सेटू मोर इंफ्रास्ट्रक्चर फैन देबी काम सरला राइट सेठी में कंपनी सब माइग्रेट करछुंदी क्लाउड को सेठी में हाईली डिमांड है राइट जॉब रोल माने डेवऑप्स सरला पे तुम कोन कोन माने डेवऑप्स इंजीनियर माने हे परियो कोन जॉब रोल्स आसुची डेवऑप्स आर्किटेक्ट DevOps release manager, DevOps security manager, DevOps test engineer. बर्तन ए रोल टा मोर अछि बर्तन जोटा कि मो अछि DevOps architect होला DevOps architects create the productive DevOps environment with the right tools, methodology and processes. They also monitor and review the technical operations. So currently what the role I am doing is DevOps architect. And someone तमे रोल मिली परिबो DevOps release engineer, DevOps security manager, DevOps test engineer परिबो ओके ये सब रे और बहुत सारा अछि तो डेवॉप्स कंसल्टेंट अछि डेवॉप्स अछि बहुत सारा रोल डिपेंड करछि कंपनी रे कोटा कर रोल दोछ राइट ये सब मार्केट डेवॉप्स इंजीनियर सब रिक्वायरमेंट विषय हम देखि छी अच्छा ये सब रिक्वायरमेंट सब अछि ओके डन एक ओवरव्यू होला डेवॉप्स रो ओवरव्यू पाई गलो तमे और डेवॉप्स विषय हम धीरे धीरे सिखिबा तो किछि डाउट रहला डाउट तो बहुत रहबो जेतो मैं प्रथम फर्स्ट एबीसीडी हम सिखुचे डेवॉप्स रे there will be lots of doubts but ask the questions okay तमे जाई घर बसी के तमे और ये करो देखो डेवॉप्स से कौन कौन माने अछि डेवॉप्स रे तो जस्ट गोटे ओवरव्यू दिया है डेवॉप्स ऊपर बट डेवॉप्स रो कांसेप्ट की टर्म्स एत बंद हमें जानि नै किछ आउरी बहुत किछ अछि हम सिखिबा राइट तो सेति पे हमें डेवॉप्स रे जानिबा पहिले ए सब डिटेल्स टेक्निक जहां भी की टर्म्स हमें जो पढिबा टर्म्स एंड टेक्नोलॉजी लाइक सब जाकर टर्म्स पूरा हमें मन रखिबा पड़े आ तार डेप्थ नॉलेज गेन करे then only we can learn something